सलाम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर अबीरा बाबर और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिबा खान and I hope you guys are doing great. Your day is going well. You know, मैं अबीरा से अभी थोड़ी देर पहले ये बात करी थी कि ट्रैवल जो है इंसान के लिए कितना इम्पोर्टेंट है. Yes. Because again, you know, you can collect things, but you cannot, you know, collect moments if you miss out on that. तो I think ये बहुत ज़रूरी है कि आप moments को enjoy करें, moments को collect करें, क्योंकि जो memories होती हैं something you can cherish forever, right अबीरा? ऐसे ही है और मेरा ख्याल है मेमोरीज के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत होती है. एंड समटाइम्स यू नो अगर आप अपने मुल्क में या अपनी जगह पर जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पर आपको अच्छी सोर्स ऑफ इनकम या फिर एजुकेशन ऐसा लगता है कि आपके मुताबिक नहीं है, तो अक्सर लोगों को एक्सप्लोर करते करते ये चीज़ें भी हिबा मिल जाती हैं, यू नो. तो आई थिंक एक्सप्लोरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत ज़रूरी है. जब तक आप कहीं का विजिट नहीं करते, आप लोगों को जानते नहीं है, मिलते नहीं, आपका एक्सपोजर लेवल जो है वो बहुत लिमिटेड रहता है. Because again, Abeera, वो ये होता है when you are traveling, right? You exchange different cultures, different cuisines. You interact with different people, whether it's like a different language. आप सीख रहे होते हो. वही बात है कि जब आप travel करते हो ना, आप ना सिर्फ कहते हो ना enjoy कर रहे होते हो उस trip को या उस moment को. I think you are the one, you know, who are gaining a lot of knowledge as well. क्योंकि again, it's about self awareness. और हम आज travel की भी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो guests भी होंगे, they will be all about travel, so you have to stick around. But before that, हम देखना चाहेंगे कि दानियाल ने आज हमारे लिए कौन सी जगह डिस्कवर की है, बिल्कुल. और अभी बताएंगे हमें दानियाल कि आज वो हमें कहाँ पर नाश्ता करवाने जा रहे हैं. जी दानियाल बताइएगा. I think हमसे वो लाइन कनेक्ट नहीं हो रही. We can't really connect at the moment. But चले दानिया से बाद में पूछते हैं कि what's there for our food. लेकिन पहले हम आपको अपने गेस्ट से मिलवाएंगे और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ पर्सनालिटीज़ हैं. वो दूसरे मुल्क के एक बहुत ही प्यारे मुल्क के एम्बेसडर्स हैं और वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं. एंड दे विल टेल अस अबाउट द टूरिज्म एंड अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स. तो आइए चलिए उनसे मिलते हैं. जी हिबा. Yes, I would like to introduce you to our first guest. On my right, we have the ambassador of Tajikistan in Pakistan, His Excellency Ismatullo Nasredin. Welcome to the show and Assalamu alaikum. Alaikum salam. And we have on our left Mr. Saidjan Shafizada, who is Deputy Head of Mission. Assalamu alaikum. Welcome to the show. Alaikum salam. And we have Mr. Bahrom, who is Consul Embassy. Welcome. Thank you very much. Welcome to the show. I would like to ask first question in accordance with the tourism. As Tajikistan is full of mountains, 98% of your area is rich of mountains and valleys. Tell us about the top 10 tourism places which we can visit as tourists. Okay. First of all, thank you for welcoming us today in your channel. This is my second visit to your excellent place. This is a place where we can introduce our country and also we can learn about Pakistan a lot. Right. Yes. With regard to your question, I would like to tell you that there are many ways of tourism in Tajikistan. Maybe I'm not able to name 10 of top destinations right now, but first of all, since it's a mountainous country, like one part of Pakistan, I think for climbers, for people who like mountains, this should be the first. Yeah. If you like to visit rivers, mountain lakes, fresh water, glaciers, it can be another. If you like any historical sites, there are many of them within the Tajikistan and also places who are connected to our region as well. If you like to have gastronomic tourism, it's also another apart. Yes, all about food. Some food you will recognize very close to Pakistan cuisine and you will like them. And many other. Or if you like, I don't know, music tourism, culture tourism, if you would like to visit our museums, our concert halls. So there are many destinations, I hope, which will be interesting for Pakistani friends. His Excellency, do you feel like you've spoken about the mountains, right? I mean, it's a landlocked country, Tajikistan. So obviously the trading part is a bit tricky as far as the country is concerned, right? But do you feel, since Pakistan has the nearest seaport, you know, with your country, and then there's so much to it, the bilateral relations, whether it comes to import, export, it can be anything, you know, it can be like any small handcrafted materials, anything that we can export or import.
between the two countries. How do you feel about that? Yeah, first of all, I will confirm your saying about landlocked country. We're even double landlocked country. Yes, in order to reach the closest port to sea, which is for us nowadays is Karachi port, we have to pass two borders. So we have to go via Afghanistan, then reaching Pakistan. And then, of course, Pakistan is a very important country for us because, as you mentioned, the closest seaports are here. Yes. And even today, even with all those difficulties which we have on transportation, we use quite intensively this capacity of Pakistani ports. With regard to our import and export, we have many commodities which we sell to Pakistan and which we buy from Pakistan. Yes. For example, textile products, pharmaceutical products, they're all coming from Pakistan to our country. Yes, we're like the pioneers for that. Yes, and back, of course, we send some other products like our cotton, like our some other crops. So trade is there. Of course, there are issues, there are difficulties, there are problems which we have to sort it out. But trade is there all the time. It is there, but you know, just to enhance that part and really, you know, get into the roots of it and actually make that, you know, as a foundation between the two countries. Yes, yes. In confirmation with what now we are asking, in December, our President, His Excellency Emaan visited Pakistan. And during his visit and his meetings with His Excellency Honorable Prime Minister of Pakistan, a very important document, the Transit Trade Agreement, was signed, which is a very good base for our bilateral trade, Absolutely. which gives to our companies more privileges and opportunities to make this trade much better and to enhance it. Yes, I think that's very important. It's also as a part of a friendship between two countries. Yes, definitely. And I would like to ask His Excellency about Khaza 1000 project. As Tajikistan is the third world's largest hydroelectrical power industry you have. So as you see, as you've been here since the last 4 years, you know we are facing energy crisis and a lot here in Pakistan. Do you feel that Khaza 1000 project and projects like this have to be projected in Pakistan? And what do you feel that that type of import and export will help the prosperity of this country as well? Yes, absolutely. First of all, we have to mention that Khaza 1000 is one of the biggest connectivity projects in this region, along with other projects. As we know, electricity which we produced is clean, very cheap and renewable. We are not burning any oil or gas. That's the major part. Yes. And of course, Pakistan is a very big need and the demand for electricity is quite high. In this regard, this project was designed and now under the auspices and under the umbrella of World Bank. Now it's implementing. We know situation in Afghanistan, which is now suspended a bit, but at least Tajikistan part is finished by 90%. So you know that 4 countries are member of this project: Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, and Pakistan. The Pakistan side, by the way, is the shortest one. It's only 100 kilometers starting from border with Afghanistan until Nowshera, where the main substation will be installed. Now we are in contact with Pakistan authorities in order to resume the implementation of this project and to complete it as soon as possible in order to supply Pakistan with a clean, cheap and renewable hydro energy. Especially eco-friendly, that is the part which is something to highlight here, because a lot of countries, you know, I think they're suffering, and even when it comes to Pakistan, I think the whole reason and the climate change and the smog, that is all because of the industries, right, within the cities especially. Yes, I agree with you. And I think that type of import and export is very important. और हम अपने viewers को भी बताते चले कि Khaza 1000 एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पावर है उसकी इंपोर्ट कर सकते हैं ताजिकिस्तान से, क्योंकि वो वर्ल्ड्स थर्ड बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इससे हम लोगों के बाहमी ताल्लुकात भी बहुत बेहतर हो जाएंगे और उसके अलावा हमारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड वेल बीइंग जो है दोनों कंट्रीज की एक साथ ही बढ़ेगी. लेट्स गेट टू बहरोम नाउ. As we are all related about tourism and we are talking about tourism, and I want to know about that part, that what is the process of visa? If I want to get to your country to visit that, please tell us what is the process of visa? Thank you very much. Our process for visa, especially for Pakistan is for us a very brotherless country. For Pakistani citizen, our process is too easy. If you want to go by road,
you can apply for standard visa, which is you must come to embassy. In embassy, we can issue standard visa. For example, some people, some tourists from Lahore, from Karachi, which city is a little bit far to Islamabad, our embassy. If they don't want to come to our embassy for standard visa, they can go through e-visa, electronic visa, which you apply from your mobile, by your mobile, by How convenient is that? How Yes. convenient. Everything is just, you know, online. Just a one click away. Yeah. Yes, just we can in internet like this. When you search our website, it has two options. One standard visa, one e-visa. E-visa you can apply by your phone, by computer like this. You can pay there, and after 1 day you will receive a mail. You print it, and when you go, if you by plane, by like this, you can receive your visa on arrival in our airport. If I'm 1.5 years I'm here in Pakistan, especially for more Pakistan people, is for them to easy and cheaper if they go by road through Afghanistan. If through Afghanistan, you need standard visa, which we issue in our embassy. It's not it's required just 2-3 documents, like from each tourist visa you need some letter from any tourist agency and submit your passport and hotel booking and just one photo. True. And you know, I mean, like Mr. Bahrom said, so if you are visiting, right, he's the guy for the visas, firstly. But secondly, I mean, it's so important to explore, especially when you're going to a nearby country, you know, like you are bordering with certain countries which are very near to Pakistan. I mean, it's great, especially for climbers, when it comes to sports. I mean, there are a lot of people who are mountaineers for hiking. I mean, this is like the nearest spot, and why wouldn't you want to utilize that part, right? And since we are speaking about travel, Mr. Saidjan, I would like to ask you, do you feel what would be setting up, let's say, a business, a company from Tajikistan in Pakistan, right? How do you feel that can improvise the cultural relation and the economical as well? For businessmen, you mean from Yes, like from Tajikistan, if somebody is investing their money or they're starting up a business here, it can be anything. It can be a restaurant, it can be regarding, you know, any of your handicrafts. Do you think that would really create a strong bond, even it would benefit economically for both of the countries? Yes, of course. To make business for maybe businessmen from Pakistan and for Tajikistan, we have a lot of documents which make it easy to open, for example, business in Pakistan. We have some, in last year, we have a lot of businessmen who want to open their own business in Pakistan. For example, if His Excellency Ambassador told us it's about food, because some businessmen want to open some Tajik restaurant in Pakistan. So that you give them, so that there's better survival for them, because they are not really fond of spicy food, right? Because definitely, as we are having a lot of cuisines here, like Turkish cuisine, why not Tajiks? Because a lot of, you know, taste buds we have familiar, and we have cultural similarities. We are Muslims as well. So I would like to ask you, sir, like as Bahrom said, a lot of people wants to invest in Pakistan. If somebody wants to invest in Tajikistan, so what are the feasible businesses and safe businesses, I must say, for Pakistanis to invest in Tajikistan, and where the tourism can be promoted and bilateral relationships can be better after that? Thank you for your question. Of course, we are encouraging all foreign businessmen to come to our country, to invest, to open their joint ventures, to open their business. In this regard, we have a package, first of all, of legislative documents, which are protecting foreign investors or foreign businessmen. I think the first step, what a single Pakistani businessman should do, to find a good partner in our country. And then through this person or company, to start his business. We have many directions or area of business in which we're interested a lot, like textile, pharmaceutical,
processing of fruits and vegetables, other kind of business, tourism, why not, to open branches of fruits. Yes, of course. But, and yes. Yeah, sorry, but I would like to ask you, is it that in Tajikistan, if, you know, as a Pakistani, I want to open something, or, you know, I want to start a business, am I the sole proprietor of that, or you would need like a local partner with it? I think to buy a property, it's still, according to our law, is not possible. But of course you can rent, you can have long time rent, you can do it via your local partner. Of course you can have a piece of land if you need it. It's all provided. There are no problems with legislative part. Of course there are procedures like in any countries. You have to pass a certain of proceedings, registration, and then whatever, and then you can start easily your business. Definitely. So, do you feel we should have student exchange programs? I mean, that is one way, you know, in any country, if you are going to study, that's the first base, you know, to exchange the culture, the language, the literature, the heritage. So do you feel Pakistan and Tajikistan should have cultural, let's say, exchange programs, or like summer camps, something of that sort? Yes, because first of all we have legislative base again. We have 2 documents signed for our cooperation on the educational area. In addition with this, we already have a number of Pakistani students studying in our universities, mostly in medical university. I can tell you about 300 or 400. Yes, since I was getting into medical college, I was, you know, the top one was Tajikistan, because it was very budget friendly as well, and the universities are good as well. Yeah. And of course now we already established our good relations with University of Punjab and University of Peshawar. We have very close relations with them. University of Punjab provided us with 10 scholarships, which now we are going to use this year or maybe next year. Also we have established academic exchange between teachers, professors, and people who are doing any kind of research. So education is very important, because we also know that there is a very good and big experience in Pakistan on educational basis. So it's already there. Of course numbers are not satisfactory. We have to raise and we have to increase it, and we are working on it. Yes, of course, I mean, you know, exchanging the cultural part is very important in order to even learn as a person. और वही बात है अबीरा कि इंसान जितना भी सीखे उतना ही कम है. खैर हम लोग ये बात तो कंटिन्यू करेंगे, बट अभी के लिए रचना है हमारे साथ जो कि हमें दिखाएंगी खूबसूरती पाकिस्तान की. तो और वो गिलगित बल्तिस्तान से हमारे साथ हैं, तो जी रचना बताइएगा. अस्सलाम वालेकुम. डिस्कवर पाकिस्तान इस वक्त पहुंची एक ऐसी जगह जो गिलगित बल्तिस्तान की तारीख के रिलेटेड है. हम ज़रूर आपको बताना चाहेंगे कि सखाफत हो, यहाँ के इक़दार हो, यहाँ की तारीख हो, बहुत अमीर है. हम जा रहे हैं शिकारी टावर की जानिब. शिकारी टावर की तारीख क्या है हम आपको लेके चलते हैं. आइए. डिस्कवर पाकिस्तान की टीम आज एक ऐसे जगह मौजूद है जो कि गिलगित बल्तिस्तान की तारीख, गिलगित बल्तिस्तान की कहानी हमें बयान कर देती है. विक्ट्री मोनूमेंट जो कि ताजुद्दीन मुगल के दौर में ये बनाया गया था. विक्ट्री मोनूमेंट ये तारीख है कि इसको बनाने का मकसद ये था कि गिलगित बल्तिस्तान के इस निज़ाम को एक महफूज तरीके से, एक तसलसल से इस निज़ाम को चलाने के लिए ताजुद्दीन मुगल ने ये विक्ट्री मोनूमेंट बनाई थी. ताजुद्दीन मुगल एक एम्पायर थे जो कि इस्माइली एम्पायर थे. बदख्शान से गिलगित आए थे और गिलगित को उन्होंने फतह किया था. इस मोनूमेंट को बनाने में जो किरदार है हमारे मुकामी लोगों का बड़ा अहम किरदार है. मैं ज़रूर बताना चाहूँगी. तारीख़ में और रिसर्च में ये बयान है कि जुटियाल और खोमर के मुकामी लोगों का किरदार इस विक्ट्री मोनूमेंट को बनाने में है. उस GDA ने इसके रिस्टोरेशन का 2022 में गिलगित बल्तिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये काम लिया था रिस्टोरेशन का. विक्ट्री मोनूमेंट जिसको कहा जाता है शिकारी टावर और ताज मुगल शिकारी टावर. मैं ज़रूर ये बयान करना चाहूँगी. उसके साथ साथ अलतित फोर्ट और बलतित फोर्ट जिसकी तारीख से आप वाबस्ता है, उसके रिस्टोरेशन का काम वो एक्सपर्ट्स कर रहे थे. उन्हीं की मदद के साए में इस ताज मुगल शिकारी टावर की भी रिस्टोरेशन का काम जारी है. यकीन करें हम यहाँ पे आधे घंटे के ट्रेक करके आए हैं. थकावट आपको महसूस हो रही होगा, हमारे चेहरे से भी आपको महसूस हो रहा होगा
कि हम बहुत थके हैं। यहाँ का जो व्यू है बहुत ही उम्दा है, आप ज़रूर आएँ, विज़िट करें। ट्रेक पॉइंट है, ट्रेकिंग करके आप यहाँ आ सकते हैं, पिकनिक आप मना सकते हैं, लेकिन अपने फैमिली के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड करें, लेकिन सफाई का ज़रूर ख्याल रखें। और कहा जाता है कि जितने ही आप कल्चर और हमारी तारीख़ के जगहों को आप विज़िट करेंगे, आप सोशल मीडिया, यूथ आजकल मीडिया में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस अब उनका है, तो ज़रूर इस जगह को, हमारी तारीख़ को ज़िंदा रखें। लेकिन हमारे ऊपर है कि हम अपनी तारीख़ को कैसे जिंदा रखते हैं, और जिंदा ऐसे रख सकते हैं कि आए बताएं लोगों को कि ये हमारी तारीख है, तभी गिलगित बल्तिस्तान। How beautiful is that? And I would like to ask you, as you were adding on that I've been there, please tell us about this place. How was your experience? Yes, it was one of the best experiences visiting many parts of Pakistan because I think northern part of Pakistan is very similar to our Badakhshan part. First of all, it's very close to our borders. A way of life, even faces of people, nature, landscape, it's almost the same. If one day you visit our part of Badakhshan, you will see how it's close to Gilgit, to Hunza, to that part of northern Pakistan. Yes, definitely, because I remember when I was studying, one of my classmates, she was from Tajikistan, and you guys have a really rich, culture to it, because again, it's a very organic lifestyle, right? When it comes to north, when it comes to mountains, when you're close to nature, and you guys have the same similarity as of our north, which was like Gilgit and Hunza in other countries. Yes. So have you visited any other place yet up north? I think I have visited. Yeah, I visited Swat Valley. Oh, amazing! Yes, it was also a very interesting experience because I realized for myself that this is a fruit place of Pakistan, Yes. where you see the production of many kind of very delicious fruits. Yes. And I would like to ask you. I think the best part is, Abeera, he has visited more than us. Within Pakistan and within our country. That's commendable. That's very nice. But I would like to ask one thing, that you've been here since 4 years, last 4 years. You have been visiting all the country, definitely you have. One part you want to go every time you get the vacations. I think northern part is the best. Is the best place. Have you been to Sakardu? Yes. By the way, we fly by helicopter from Gilgit to Skardu, and we could see from above, from sky, this beauty. I must say, you have utilized your 4 years in Pakistan quite well. No wonder you are where you are today, right? Yes, I mean, because again, traveling is not just, an escape from life. It's just to, explore life more. Yes. Okay, when we're talking about the culture, when we're talking about the food, do you think there should be more educational institutions where they are teaching and where they are promoting peace and tolerance, because that is something which we need between our neighborhood, between any other country, right? Yes, you're absolutely right, because we are living in a very complicated world. Yes. We see some, gestures and some movements from other countries towards our culture, even towards our religion sometimes. And of course, exchange between our countries, how to do it better, how to know each other better. By the way, through culture, I think we have to learn each other. Because our main issue which we are realizing here, that it's still lack of information about our countries. Yes. Absolutely. In both sides. Yes. There's an image that we've built ourselves. Yes. Culture can be a very connecting way of doing it closer. Definitely it is, and I feel that that's very important, Hiba, कि जब आपको एक जगह का कल्चर और जब तक आप उसको एक्सप्लोर नहीं करते, जब तक वो आपके सामने नहीं आता, तब तक आप कोई भी कोई पॉइंट आउट नहीं कर सकते. ताजिकिस्तान के बारे में आज जैसे हम बता रहे हैं अपने व्यूवर्स को, तो डेफिनेटली वो पसंद करेंगे कि वो कभी जाएं और जाकर देखें. डेफिनेटली. और अबीरा, ये भी बात आ जाती है ना, when it comes to social media, when it comes to television, when it comes to our let's say journalism, एक इतनी वो कहते हैं डिप्लोमेसी चल रही होती है, इतनी लॉबीज होती हैं, that people tend to create an image against a country. Yes. And that is not true, but that is what we see on our newspapers, on our news channels, and we just refrain to visit a certain country. Yes. But I mean, in
reality, when you meet the people, they're generous, they're kind, and there's so much to it. Definitely it is. And one more part कि जब हम मुसलमान हैं तो उसकी एक अलग टूरिज्म की ना वैल्यूज़ हैं, बिकॉज डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ एक गोरा कल्चर है कि हमने टूरिज्म को प्रमोट करना है या फिर बाहर जाना है तो जी हमने कोई ब्रिटिश कंट्री ही देखनी है. हमें अपने जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं और इतनी खूबसूरत ताजिकिस्तान इज़ वन ऑफ देम. सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ऐसी जगहों को भी एक्सप्लोर करना चाहिए. एंड आई वुड लाइक टू आस्क Bahrom about the visa and all these things. After that, I am going to ask you very tricky question. That is there any language barrier or any rules and restrictions for Pakistanis to visit your country? Because definitely a lot of countries have their own grounds and they want the tourists to be under that roof. So please tell us if any of these. Okay, I think for Pakistani people, language is not too difficult because our language also is very close. Right. Our language is Tajik Persian language. It's very close to Pakistan, to Urdu, to Pakistan language, very close. I think, and now in Tajikistan, I think all population people in Tajikistan now they know English. Yeah. They, for example, they can speak English, Russian language, and Farsi language. I think language is not problem for people and who I feel you guys Pakistan. have edge over more languages, right? I mean, automatically. Because now in our kindergarten, the kids studying English because English language one is famous, very important language in. Yes, it's something basic times. to survive in the country, in any country in this world. Definitely. Yes, absolutely. We're going to continue discussing more about travel and Tajikistan, but for now, छोटी सी break का time है. इस break के बाद हम वापस आते हैं. Stay tuned. अब एंजॉय करें पाकिस्तान के हसीन नजारे अपने आईपैड, स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन, आईफोन या किसी भी डिवाइस पर इन अल्ट्रा एचडी क्वालिटी. जब चाहें जहां चाहें डिस्कवर करें पाकिस्तान. ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान. डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम तजाकिस्तान के एम्बेसडर और उनके साथ जो गेस्ट आए हैं उनसे बातें कर रहे थे और दोबारा से उनसे बातों का सिलसिला जारी करते हैं। Yes, absolutely. We're going to continue to that. Okay, sir, I would like to, just highlight there are a few things about Tajikistan, right? I mean, it's really dependent on, let's say, it's heavily based on remittance, right? You really depend on income which is from other countries, right? I mean, people move from Tajikistan or there's trade, all of that, right? Just to bring in revenue to the country. So do you feel during your tenure in Pakistan, you want to bring in any economic policy which can enhance and which can improvise that situation for your country? Yes, you are right. I think we have an issue that our trade turnover with Pakistan is not on the certain level yet. And unfortunately, it's decreasing because of certain circumstances. The first is a transportation issue via Afghanistan, which creates a lot of obstacles for business people. Another reason for this is that we have now exchanged products, or we are producing those products which we before imported from Pakistan to our country. So now we can produce them in our country with your expertise, with your support. In this regard, the turnover is decreasing, which is not a loss. It's not a loss, no. But of course, we have to work hardly. When we attract more businessmen, then of course our trade will be more. Of course. We mentioned tourism. This is also one part of trade. Yes. We mentioned even our educational exchanges. If people will be studying there in Tajikistan or in Pakistan, then they will be more interested to create something there because they will know country much better. Yes. Of course, we have to work on it, and again, even repeating that our level of bilateral trade and turnover is not on a good level. We have to work on it. We have to attract business. We have to attract production, creating of joint ventures, and to be close and much closer economically. I think those initiatives are very important, but I feel due to COVID, right, there was also a huge hindrance and a stop in between. Yes. That period of 2 to 3 years, I think that affected a lot. Yeah, it was a big loss, by the way, yes, because when you started something and then the world stopped, so I think it affected all of us. But now it's time for recovery. And I hope that in near future we will have. That's why we are promoting tourism. Yes, we really hope so. Because unfortunately, that was something which was, it just affected the entire world overall. And especially for countries who are already, I feel, suffering, and there's an inflation rate, they just get to, get affected by it even worse. Yes. Yes. Hopefully, there's always hope. उम्मीद पे दुनिया कायम है और इंशाल्लाह हर चीज़ बहुत बेहतर होती जा रही है और टूरिज्म के थ्रू तो हर चीज़ बहुत खूबसूरत होती जाती है। और अभी हम आपको दिखाना चाहते हैं तजाकिस्तान की कुछ बहुत ही खूबसूरत जगहें and I would like you all to view the beautiful sights of Tajikistan. So let's just have a look.
अबीरा, मुझे एक सेकंड के लिए पता है क्या लगा? एक क्लिप आया मुझे लगा पसु कोन्स आ गए, एक क्लिप आया मुझे लगा स्कर्दू पहुंच गए, एक मालूम जबा पहुंच गए. I mean there's so much of similarity there, whether it's like और ऐसा लग रहा था कि इस्लामाबाद और कितने खूबसूरत फल और कितना खूबसूरत लग रहा था. Absolutely, I mean there's so much of it, but again you know even when it comes to your flag, that's also something which is a representation of sovereignty, triumph, and peace, and which is something which we need in today's world, to be honest. It's pretty much that. Okay, I've seen a lot of documentaries on your country where you have females, women working in the fields of art, handicrafts, pottery designs, crockery. It's beautiful, it's stunning. Like we also have, our Multan. I mean, we have certain cities and places where we also promote all of these handicrafts a lot. Do you think, just considering women, there's an opportunity where we can involve the women from our country and from your country and trade on the basis of that? Yes, sure. I can even tell you more example of our society's efforts. That I think that women empowerment is very important in our region, because centuries ago women were in a very, I don't know, not in an appropriate level of their activities. But even in Pakistan we see how women are active here, and they're involved in all kinds of business, in civil society activities, and in many. And you mentioned handicraft, of course, why not? Because there are many similarities. They can exchange by exhibitions, by showing their results of their So do handicrafts. Tajikistan have any exhibitions like that, so our women watching can promote and participate in that? Yes, I think we have yearly the calendar of events, cultural events as well, of course, along with economic events, where people from art, from handicraft, from different kind of business, they can participate in such kind of exhibitions, if they're painting or doing something by their hand. And now we also have this special program of our government of supporting the handicrafts, because some of them we are losing some of them. Some of them just disappearing, and we have to revive them. And that's something which is very close to your roots, and that shouldn't ever disappear. And that's also one way to boost the economy for the local artisans, right? For any country. I mean, small towns, people who are not really from big cities, I think it's very important for them. So do you think we can also incorporate, let's say, some workshops, some skill-based programs, when it comes to cultural and some scholarship exchange for the talented ones, like so that their programs. work could be appreciated, so they work harder for your country and our country, definitely. Yes, of course. For example, in our country we have a so-called Academy of Arts, when they are gathering talented people, even from rural area, from small communities, and to choose the best one in order to, support them in their effort. I think such kind of exchanges can be organized, and there is a PNCA in Islamabad, which we are connecting with them very yes. And sometimes we're visiting their exhibitions. We can connect them with appropriate bodies in our country, and they can have this kind of cooperation. That's the best platform for it that. is. And I would like to ask you about one Great Silk Road, if I'm not wrong. Please tell us about that from your country. This is one Great Silk Road, but there are many routes of it. If you see to different maps, so I don't know, there are maybe some dozen of different routes which were established by people some centuries ago. And our two countries, I think we are one of these routes. And we have this initiative. I think it's on the second, if I'm not mistaken. Yes. And of course, these initiatives now, we are all members of this BRI initiative, which promoted by our Chinese colleagues now, which is part of this great Silk Road. Is it correlated like the Great Wall of China? Is it like that? Great Wall, or does it have a historical background? Was constructed against other countries. It's a deep history. We don't want to get there, not on our live television for sure. Thank you so much for highlighting those parts. But okay, when we are speaking of women, we are speaking about women empowerment. Mr. Bahrom, I would like to ask you, when we
tend to travel to a certain country, we really have to focus on the security part. For a solo traveler, me being a girl, if I plan my visit to your country, how safe is it for women to travel? That sigh. For Tajikistan, it's no problem. Safe is Tajikistan. It's a very safe country. Even our girls, our women, they feel free. No any issue about security. For example, in Tajikistan, you can face a lot of girls, same like yours, free, modern. It's like and they won't judge us, right? When we're like taking our selfies and vlogging the whole area. There's no issue. Right. That's great. That's so do you have any specific programs for travelers, tourists, just to promote your culture and the tourism in your country? Do you have any programs like that? Yes, we have special program for tourism to develop our tourism. Yes, in during times we meet a lot of with some tourist companies. We promote our tourism section. We invite a lot of people in Islam, but to our embassy, if they need something about a tourist place of Tajikistan, we can provide them from some documents, from some videos. Like an invitation letter or something from the country. But I want to add on one part that some people are underprivileged, but they are so talented and they want to, explore the countries. And, vlogging is very common these days. Everyone is doing vlog. Not everyone, but the people with good skills. But when it comes to people who are underprivileged and cannot travel to the countries, definitely as there is high inflation in your country as well. So do you guys cater them or sponsor them for the trips just to promote your own tourism and the bilateral relationships? Yes, if someone wants our help, our support, we can support him, no problem. We have some forms of embassy. He can come to our embassy, we can talk with him if something. So can we say that just go to Bahrom? Yes, just we will find sponsors. Sponsor, no problem. I think Bahrom is not to be seen after this. He's like, I am unavailable. These girls are getting on my head. All right, when we're continuing with the same conversation, right? You've been in Pakistan, sir, for quite some time. I think you came right around the corner of COVID, right? Just a few months before that. Unfortunately, that was not the great time. But when it comes to our country and when it comes to your country, we have a lot in common, when it comes to peace, integrity, some, being a Muslim country, we share like similar thoughts as well. For now, so far in Pakistan, what have you found common in our citizens and your citizens, something you can relate to? Yeah, I think there's the first which comes to my mind. It's our hospitality. Absolutely. And our friendliness. I think this is the most common, because if we compare with our nations, our people of our two countries, we're very simple. We don't want any complication in our people-to-people contacts. I think this is the most commonality. Of course, we mentioned food. We mentioned a kind of dresses, national dresses, especially in our rural area, which has some commonality. Our nature, at least, you see on the video, mountains, rivers, and whatever. And we never feel in Pakistan that we are foreigner. We feel here like this is our second home. Since you have your family with you as well, right? Yes, I have only my wife here because my children are grown up. My one wife here? Only one. There's only one. My children grown up and they have their own life, their own families. But my colleagues are more happy because they have children here. Their children, they're going to school, to kindergartens, and of course they're more connected with Pakistan via their children, because they have more connection, more contacts with local people. So since and you've how been amazing here, that must be, that since their kids are also studying here, they can have they can have their grip on the language as well. So do you speak Urdu? Anything? Not myself, of course, but I understand a part of Urdu. Not even Thora Thora? Thora. Yeah, see? You got caught. Yes, because we have also commonality in language, because we know that Urdu is a composition of different languages, and
Persian is and part yes, of it. Yes, definitely. Many good words in Urdu, they are from Persian, and Yeah. we are very happy when we can hear them. And but I think our small colleagues, the children of my colleagues, they speak Urdu. Because most as of they're them. studying Wow, right here, nice. so they might know Urdu as well. And I think that's very integral part if they are living right here. And I would like to ask you one thing, that one thing you want Pakistanis to have like Tajiks, and you want one thing of Pakistanis to Tajiks to have. What is that? The one quality, perhaps? You can tell us both, quality and the Okay, bad part also. Yeah, it's difficult to compare because we live in different societies. Yes. We respect Pakistan because there are certain requirements, certain habits which we don't have, and same in our country. I think what we can take from Pakistanis are more open, even compared with my nation. Because when I'm on the street in Pakistan, in the market, whatever, any person who is drinking tea or eating something, he will invite you definitely. Please come and join. Yes, always. And Which you'll is also not get common some... in our country. Okay. We are a bit maybe different. And what I would like Pakistani to maybe to learn from our people, maybe I think they should be more modern, not in big cities, but in rural area. Because our rural area people, since we had this influence of our neighboring countries, so they are more modern in terms of even, I don't know, dressing, of understanding their life. Here people are very good in rural areas. They are much better than even people The from big cities. Yes. True, true. Big city people are a bit complicated. Commercial. Yes, they are more commercial. Yes. Yes, absolutely. But again, it's about the mindset. I think any country you visit, you know, they say do as the Romans do. So I think you really need to blend in, you need to adapt according to their culture, religion, you know, how they live. All these small things, they really matter. बिल्कुल Abeera. और जैसे पाकिस्तान में बहुत सारी you know we have a lot of minorities as well, different cultures and different you know religions हैं. Tolerance है और उन उनके सबको regarding. एक साथ लेकर चलना, you know we cannot judge a single person on the basis of their dressing or you know all these things we cannot. But let me get back to the cuisine part. As you've told us off air that you love Pakistani cuisine, so please tell us about the best Pakistani cuisines you've ever tried. Something which matches your taste I don't buds. want to offend Punjabi people, but for example, I will be offended. Okay, but for us, very close food from Khyber Pakhtunkhwa. Oh, the meat. Yes, The meat thing. Meat dishes are very close to our culture, Yes. to our type of cooking. Of course, we also like some spicy food. Spices are the best maybe in Pakistan. Right. But cuisine from that part of Pakistan is more close to our heart. I think the kebabs and the pulao, Yes, and then kebabs, when the it comes to the dampurs, the barbecue, karais, the whatever yes. they do, yes. We are carnivores, and I love that you guys are too. I don't know how would a vegetarian survive though. Well, now I think the vegetarian trend now is also popular and modern in our country as well. Yes. I don't know because I am a meat-eating person. Yes. But of course we respect if What somebody. do you do with the cholesterol levels then? We exercise a lot. That's the best part. That's something you need to incorporate along with being a foodie in life. बिल्कुल और उसके बगैर मेरा ख्याल है हिबा खाएं पिए लेकिन जलाएं जरूर. Absolutely, absolutely. जैसे हम सेल्फीज लगाकर बाकियों को जला रहे होते हैं ना, हमें चाहिए कि हम अपना जो बर्न आउट है ना वो भी करें ताकि हमारी कैलोरीज और कोलेस्ट्रॉल हर चीज जो है ना एक बैलेंस में रहे. Let me add Bahrom to the conversation and please tell us about your experience since you've been in the Pakistan for a few years, I guess 1 or 2 years. So you are accompanying your family with you. Yes. So what do you cook or eat at home? The Pakistani cuisines or Tajik? It's a very good question. It was my first time in Pakistan. Okay. When I came to Pakistan, it was my first visit in Pakistan. Before I came to Pakistan, my imagination about Pakistan was very different because when you check in internet, the news like this about Pakistan is different. When I reached Pakistan, Islamabad, I saw it's different place. People is different. People open. Before I think in Pakistan all women is very close. It's like Like covered. yes, right. covered like
but I meet the people in Pakistan, especially in Islamabad. The lifestyle is different, Yes, the embassy lifestyle, yes, I must You might have highlight. seen Pakistanis only in movies like that. Really? Yes, yes, like the, In Bollywood movies, that's totally not a Pakistani But I'm sure look at all. I'm sure since you know when it comes to embassy, you guys have that edge, and you guys are very privileged to experience all of that in Yeah. Pakistan. That's another side. Yes. maybe. But yes, but Pakistan's food for me, as His Excellency Ambassador Right. said, Thank you so we- much, we- Bahrom. is dampucht. Dampuk, right. I think we're going to treat them with dampuk soon. Okay, now that we are, wrapping up our first segment, just last thing, your national sports is also wrestling. I can't really pronounce the term, how you call that term. We call it gushtingiri. Gushtingi, right? Yes. And even in Pakistan, we have even women now being a part of wrestling. We call it kabaddi, and more of like there's another different levels to it. Do you think when it comes to sports as well, that can also be something we can focus on between the two countries? Yes, just recently, by the way, as an example, it was, I think, December, end of November or beginning of December, the Taekwondo Federation of Pakistan organized a tourney or kind of local championship, and all Central Asian countries were invited, and we also had 3 or 4 participants in this exercise. So some of our federations are already in contact with in sport, Right. but now we are trying to promote those kind of sports which are very popular in Pakistan, but doesn't exist or don't exist in our country. Yeah. Just exclude cricket. Like cricket or polo. Yeah. Of course, we know about them, but people never use. Even use ice them. hockey. Yes, yes. And, I think the first sport in our country is football, is soccer, by the way. And then there's gushtingiri and fighting and wrestling. It's like national. But we will be happy if one day champions from Pakistan will come to our country to teach our people those exotic sports for us. Yes, it is. Thank you. Thank you for so that. much, and I would like you to say a few words for our viewers, for Pakistanis. What do you like to have the last few words? Yes, for please. Just an end note. First of all, thank you very much for hosting us here and using this opportunity. I just would like to a small announcement that in the recent few weeks we are going to open our direct flight by Somon Air from Islamabad to Dushanbe. Amazing. And I hope visitors, travelers, and tourists will enjoy this flight. It will be only 1 hour, 20 minutes flight, very close. Yeah. And just summing up our discussion today, I am happy all the time to be in Lahore, in Punjab. Thanks again for your hospitality. And I hope this is our second but not last visit. No, All the best. absolutely All the not. best. Not really. Tashakur. Right? Tashakur. Thank you for Thank being you on the so show. much. Thank you so much to you all. We are Yes. privileged to have you on our platform, और हम अपनी तमाम गेस्ट को सलाम पेश करते हैं जो एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच में बनाने के और लिए एक जो बड़ा एक peace का ambassador union है ये। Yes, और बड़ा खूबसूरत एक ताल्लुकात है, और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा टूरिज्म जो है पाकिस्तान से ताजिकिस्तान और ताजिकिस्तान से पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा प्रमोट हो, बिकॉज दे हैव सो मेनी सिमिलैरिटीज़ एंड डेफिनेटली दे आर मुस्लिम्स एज वेल. तो हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं. अभी एक वक्त हो गया है एक हाँ, और ब्रेक का. अबीरा ब्रेक में जाने से पहले मुझे ये चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी कि आई थिंक जब ये हमारी टूरिज्म की साइड जो है ना हम ज़्यादा फोकस करेंगे तो ही आपके इकोनॉमी Yes. और कहते हैं ना कल्चर, आपके लिटरेचर, आपकी हेरिटेज, ये सारी चीज़ें प्रमोट होती हैं. एंड टूरिज्म जो है ना वो एक ऐसा, मैं कहती हूँ, एक पीसफुल सा एक यूनियन है जिसके Yes. थ्रू आपको एक कंट्री का जो इमेज है ना, एक्चुअल पॉजिटिव इमेज, वो मिलता है. एंड दैट्स वेरी एसेंशियल. बिल्कुल ऐसे ही है. तो हम मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और Yes. ब्रेक के बाद हमारे साथ कुछ और गेस्ट भी मौजूद बिल्कुल. होंगे. सो विल बी राइट बैक. स्टे ट्यून्ड.
अब एंजॉय करें पाकिस्तान के हसीन नजारे अपने आईपैड, स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन, आईफोन या किसी भी डिवाइस पर इन अल्ट्रा एचडी क्वालिटी। जब चाहें जहां चाहें डिस्कवर करें पाकिस्तान। Only on Discover Pakistan. डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।
अब एंजॉय करें पाकिस्तान के हसीन नजारे अपने आईपैड, स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन, आईफोन या किसी भी डिवाइस पर इन अल्ट्रा HD क्वालिटी, जब चाहें जहां चाहें। डिस्कवर करें पाकिस्तान, ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान। डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान। वेलकम बैक। हम ब्रेक से पहले जो है ताजिकिस्तान, टूरिज्म, पाकिस्तान की बात कर रहे थे एंड अब हमारे साथ नए गेस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सो यस, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू माय फर्स्ट गेस्ट। ऑन माय राइट वी हैव शीबा Ghias, who is a hair technician, makeup artist and also a trichologist. Assalamu alaikum. Welcome to the show. Thank you so much. And we have Mehwish Weqar जो कि कनाडा से हैं. She's a TV host at Toronto 360. उसके अलावा वो TV host होने के साथ साथ मॉडलिंग भी करती हैं. And she is a beauty ambassador and youth ambassador for peace in Canada. Welcome to the show. Thank you so much. And the third guest that we have is a singer जो कि बहुत अच्छा गाती हैं. Welcome to the show, Emaan, Fatima. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. साथ में ये भी बता दें कि कितने अर्से बाद मिले. बिल्कुल नहीं, मैं कहते हैं मैं और मेरी फैमिली तो ईमान से कहते हैं ना फैन है आपकी आवाज़ के और हम लोग गाना सुन चुके हैं, लेकिन हम लोग आपसे जो है ना अभी शो पे भी गुनगुनाएंगी आप थोड़ी देर में बस. और गिले शिकवे बाद में करेंगे, बीच में ही करना. सही है. नहीं नॉट ऑन स्क्रीन, हम लाइव जा रहे हैं. और मैं सबसे पहले सवाल पूछना चाहूँगी महविश आपसे. एज अ टीवी होस्ट, यू आर अ टीवी होस्ट, आप टीवी होस्ट भी हैं, ब्यूटी एम्बेसडर भी हैं, यूथ एम्बेसडर भी हैं. इतने सारे काम एक पतली दुबली सी लड़की कैसे कर लेती है? और पाकिस्तान और कनाडा दोनों में यू ट्रैवल एज वेल, तो हाउ डू यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स? प्लीज टेल अस अबाउट इट. मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द ग्रेट इंट्रोडक्शन. यू बोथ आर माशाल्लाह वेरी ब्यूटीफुल और बहुत अच्छे गेस्ट ने भी साथ में ज्वाइन किया हुआ है. मैं यही कहूँगी आई एम एक्चुअली अ वर्कोहॉलिक. मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं कुछ नहीं कर रही होती ना सो इट बॉदर्स मी. सो आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ बिजी और अलग अलग चीज़ों में आई फील दैट देर आर मैनी चैलेंजेस और जहाँ मुझे लगता है कि अच्छा ये चीज़ करना थोड़ी मुश्किल होगी, आई लाइक टेकिंग चैलेंजेस एंड आई लव टू कीप माई सेल्फ बिजी. तो यही रीज़न है कि मैं उस तरफ भी हूँ, यूथ एम्बेसडर की तरफ भी हूँ, फिर ब्यूटी एम्बेसडर की तरफ हूँ, वेयर वी प्रमोट डिफरेंट प्रोडक्ट्स. एंड एवरी मंथ नॉर्थ अमेरिका का एक डिजिटल मैगजीन है जहाँ पे मेरी फ़ोटो शूट्स आती हैं विद डिफरेंट थीम्स. सो वी ट्राई टू वर्क विद डिफरेंट पीपल के उसमें उनके कपड़े होते हैं जिनको हम प्रमोट करते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है. और साथ साथ फिर टीवी होस्टिंग भी चलती है मेरी जो कि वंस अ वीक मेरा शो आता है एंड आई गेट टू मीट विद डिफरेंट पीपल एंड शेयर देयर जर्नी. ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यू नो शी इज़ हैंड्स ऑन, कि एक काम नहीं करना, 2 3 4 काम सब कुछ साइमल्टेनियसली लेके चल रही हैं. एंड वन थिंग आई वांट टू हाईलाइट दैट शी इज़ यू नो द एम्बेसडर फॉर पीस. और ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, समथिंग दैट यू नो वी ऑल नीड इन लाइफ. एंड आई थिंक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है बिकॉज व्हेन आई वाज अप्रोच्ड फॉर इट तो मुझे आई हैड टू आस्क देम कि ओके मुझे एग्जैक्टली क्या करना होगा, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी. एंड दे सेंट मी दिस ह्यूज बुकलेट ऑफ ह्यूमन राइट्स जिसका मुझे क्या आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता होता. और ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि बीइंग अ ह्यूमन हमारे क्या राइट्स हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट पीस इट्स नॉट जस्ट के वॉर, ये बहुत सारी अलग कैटेगरीज होती हैं जो हमारे यूथ
کے تھرو ہم اپنا میسج پہنچا سکتے ہیں, کیونکہ ان کو اس اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ جس فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کے ساتھ ڈسکریمنیشن تو نہیں ہو رہا ہے, جینڈر ایکویلٹی, ایکول رائٹس, all these things are very important. اور اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ گوگل پہ بھی جا کر ہیومن رائٹس کو پڑھ سکتے ہیں, اینڈ ڈو میک شیور کہ کوئی آپ کے ان رائٹس کو آپ سے نہ لے. That's very important. اور میرا خیال ہے شیبا از این انرجیٹک پرسن ہر سیلف, اور جب ہبا آپ اپنی انرجیز کو calm and composed, اور یہ نا کہ انہوں نے اپنی ساری انرجیز کو بہت اچھے اچھے کاموں میں وہ کر دیا ہے, کہیں نہ کہیں وقف کر دیا ہے, اب شی از ویری کام ایٹ اٹ. اچھا میں شیبا سے اب پوچھنا چاہوں گی, شی از trichologist also, which is related to hair, and you're a hair expert also. Please tell us about کہ اتنی different آپ نے یہ اتنی یونیک چیز ہے, میں نے پہلی بار ٹرائیکالوجی کے بارے میں سنا ہے, تو پلیز آپ اس کے بارے میں بتائیں ہمیں. اچھا بیسکلی کیونکہ نارملی ہماری جو جنرل پبلک ہے اور میرے جتنے بھی مارننگ شوز ہوتے ہیں اس میں میری ہمیشہ ہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بہت سادہ الفاظ میں بات کریں, تاکہ جو میری آڈینس ہے وہ ہر لیول کی آڈینس, جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو ہماری انگلش آرام سے سمجھ لیتے ہیں, لیکن ایسے کچھ لوگ ہیں جن کو تھوڑا سا لینگویج میں پرابلم ہے, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ میں ان کو بہت سادہ الفاظ میں بتاؤں. تو ٹرائیکالوجسٹ آپ کہہ لو یا ہیئر ٹیکنیشین کہہ دو, بیسکلی ہم ہیئر پہ کام کرتے ہیں, بالوں پہ کام کیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں میک اپ پہ بہت زیادہ لوگ فوکس کرتے ہیں, ان کو پروڈکٹس کے ہمیں یہ لائنر مل جائے, ہمیں یہ بیس مل جائے, کوئی بھی اگر میرے پاس, کیونکہ میں گرومنگ کے لیکچرز بھی دیتی ہوں, میں ڈفرینٹ بینکس کے ساتھ بھی میں کام کر رہی ہوں, اور ڈفرینٹ گورنمنٹ کی آرگنائزیشن بھی ہے. obviously دے نیڈ کہ ہمیں کیسے کیا پہننا چاہیے, ہمیں کون سا ہیئر اسٹائل سوٹ کرتا ہے, ہمارے بیٹھنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, تو میرے گرومنگ بھی اس پارٹ میں آتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں کویشچن پوچھتی ہوں تو ہمیشہ سب سے زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے جی یہ بتا دیں میرے فیس پہ بیس کون سی اچھی لگے گی, مجھے لپسٹک کون سی اچھی لگے گی. اس کے علاوہ ان کو بالوں کے بارے میں نہیں اتنا انفارمیشن ہوتا, اور میں ہمیشہ کہتی ہوں ٹرسٹ می یو آر ان ٹو دس فیلڈ, اگر آپ کا بال خوبصورت ہے اور اچھا بنا ہوا ہے تو جسٹ ون لپسٹک از مور دین انف فار دا انٹائر میک اپ. لیکن اگر بالوں کی بات کر رہے تھے نا, تو وہی بات ہے, یو نو وین اٹس یو دی ٹرائیکالوجی پارٹ از, آئی وڈ لائک ٹو جسٹ ایک میں سمپل ورڈز میں اگر ایکسپلین کروں نا ویورز کو, وہ یہی ہے کہ آپ کے جس طرح اسکیلپ ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں, آپ کے بال کسی کے پتلے ہیں یا کسی کا بہت ہیئر فال ہو رہا ہے, اس سے اگر میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آج کل کے زمانے میں لڑکیوں سے زیادہ لڑکوں کی گنج ہوتی ہے, یو نو دس سرٹن ایریا, وہ یہاں پہ بال نہیں رہتے, اس کا کیا حل ہے؟ کہ آپ کو یہ تو ہوتا ہے نا, نہ تو سمجھ آتی ہے کہ یہ کب سٹارٹ ہوا ہیئر فال, سو واٹ از دا کیور؟ اچھا دیکھیں, پتہ تو چلتا ہے کہ ہیئر فال کب سٹارٹ ہوا, اس کا بہت آسان سا میں آپ کو ایک چیز بتا دیتی ہوں. جب آپ کا ہیئر فال سٹارٹ ہوتا ہے تو ایک اسپیسیفک کوانٹٹی 60 to 70 ہیئر, یعنی تقریباً اتنے سے بال خواتین کے جو کہ لمبے ہوتے ہیں, تو وہ اگر وہ راؤنڈ ہو جائیں تو تقریباً اتنا سا گچھا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک نارمل فال ہے, کیونکہ آپ کا پرانا بال گرتا ہے, آپ کے سر پہ 6 سے 7 سال تک ایک بال رہتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس نے گر جانا ہوتا ہے اور اس کی جگہ ہمارا نیا. اور یہ پروسیس اللہ تعالیٰ کا اس قدر خوبصورت ہے کہ اتنے یہ سسٹمیٹک ہو رہا ہوتا ہے کہ کب ہمارا پرانا بال گرا اور کب اس کی جگہ نیو ریپلیسمنٹ ہوتی ہے تو ہمیں معلوم نہیں ہو رہا ہوتا. اٹس نارمل. لیکن اگر آپ کا گچھا ادھر سے اتنا موٹا ہو رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے, آپ کو خود فیل ہو رہا ہے کہ ہمارا ہیوی ہیئر فال ہے, پھر یہ آپ کا پرابلم ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کے پاس 2 آپشنس ہوتے ہیں, یا تو آپ کسی بھی سرٹیفائڈ ہیئر اسٹائلسٹ کے پاس جائیں جس کو پتہ ہے, اور اگر وہ آپ سرٹیفائڈ کے جائیں گے تو اس کے پاس اپنے کچھ ٹریٹمنٹس, یعنی اگر آپ میرے پاس اسٹوڈیو میں آتے ہیں تو میرے پاس ہیئر فال کے کچھ اسپیسیفک ٹریٹمنٹس ہیں جو کہ میں آپ کو اس وقت ٹریٹ کر سکتی ہوں. لیکن اس دوران مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ کاسمیٹولوجی فیلڈ یعنی ہماری سلون لیول پہ ہی ٹریٹ ہوتا ہے. اگر نہیں ہوتا تو پھر ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس جائیں, اور پلیز آپ جائیں, گھر کے جو خود کے ٹوٹکے ہیں وہ آزمانا چھوڑ دیں. میں ہر مارننگ شو میں کہتی ہوں جو چیز شاید آپ کو سوٹ کرتی ہے وہ مجھے سوٹ نہیں کر سکتی ہے. میری باڈی ٹیمپریچر, میرا باڈی ایچ پی, میرا لیونگ سٹائل, میری ڈائٹ, میرا لیول آف اسٹریس, ہر چیز بہت مختلف ہے. تو پلیز آپ جس کے پاس بھی جائیں, اسٹائلسٹ کے پاس جائیں, پیسے کم بچائیں. آپ ایک دفعہ یا 2 دفعہ ٹریٹمنٹ میں آپ پیسے بچا لیتے ہیں, 2000-4000 کے ڈفرینس آج کل ہوتا ہے, مہنگائی اتنی زیادہ ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے, چونکہ آپ چیپ ٹریٹمنٹس لیتے ہیں, چیپ اپنے بالوں میں پروڈکٹ لگواتے ہیں, بعد میں آپ کو اس سے ڈبل جا کے ڈرماٹولوجسٹ یا اس کی ٹریٹمنٹ میں کرنا چاہیے. اب بات آ گئی گنج پن کی. اگر تو آپ کا گنج پن سٹارٹ ہو گیا, دیکھیں کچھ ریسیشن پارٹس ہوتے ہیں جو جینیٹک ہوتے ہیں.
रिसेशन का मतलब है आईब्रोज के बिल्कुल ऊपर जो हमारे दो पार्ट बनते हैं उसको हम रिसेशन कहते हैं. अगर वहाँ पे आपका गिर रहा है तो जेनेटिक है, तो उसको हम कंट्रोल किसी हद तक कर सकते हैं, किसी हद तक नहीं कर सकते. उसमें आप डिफरेंट हम बॉन्ड ट्रीटमेंट ले लें. लेकिन अगर आपका गंजपन ज़्यादा जा रहा है तो उसके बाद अब इतने लेटेस्ट ट्रीटमेंट आ गए जिसमें हमारे PRPs आ गए और हेयर ट्रांसप्लांट. अगर 1 मिनट है, मैं जस्ट 1 मिनट में एक्सप्लेन कर दूँ कि लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि जी PRP क्या है, PRP करवाएं या करवाएं. हमारा प्रॉब्लम ये है, हम डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब हम पूरी तरीके से बीमार हो जाते हैं, हाथों से निकलने मरने वाले हो जाते हैं. हम अपने बालों को, स्किन को भी तब हम फेशियल के लिए जाते हैं जब स्किन पे झुर्रियां पड़ चुकी हो जाती हैं, ब्रेकआउट्स हैं, ब्लैक हेड से मुंह भरा हुआ है, खुद भी दिल नहीं चाह रहा देखने को, तो अगला क्या देखेगा. और बालों में भी ये, जब हमारे इतना गंजपन हो जाता है कि हमें खुद तो पता है लेकिन अगले वाले दूर से हमारी चमकता हुआ सर नजर आ रहा होता है, तो फिर कहते हैं ओह अब क्या करें. देखिए, अगर आपका ये वाला एरिया में बाल हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं या PRP लें. PRP एक सर्टन एज तक होता है. आपके सर पे जो हेयर फॉलिकल है वो एक हद तक जिंदा रहता है. अगर बहुत अरसे तक वो डेड रहेगा, वहाँ पे बाल नहीं रहेगा, तो वो कम्प्लीटली डेड हो जाएगा. फिर उसके बाद आपके पास हेयर ट्रांसप्लांट यानी नकली बाल लगाने की ऑप्शन है. लेकिन आप अपना ही एग को रीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो PRP होता है, लेकिन वो टाइमली है. ये नहीं कि 40 साल बाद अचानक आप कहते हो तो मैं बहुत गंजा, अब तो एक झालर बन गई, अब मुझे जी करना है. या ये है कि 20 साल में हेयर फॉल स्टार्ट हुआ है और उसके बाद आप जाके 10 साल के बाद आप कह रहे हो कि यहाँ से जो मेरे बाल हैं अब इसको किसी तरह, वी आर नॉट मैजिशियन. फिर उसके बाद आपको हैवी जो है पैसे भी भरने पड़ेंगे, उसके बाद आपको जाके ट्रीटमेंट लेने पड़ेंगे. और PRP जरूरी नहीं है कि हर दफा सक्सेसफुल हो, तो फिर ऑप्शंस बहुत कम रह जाते हैं. तो जैसे मैं कहती हूँ फेशियल महीने में मिनिमम 1 दफा जरूर करवाएं. हेयर के ट्रीटमेंट्स भी अगर आपको लग रहा है तो उसको टाइमली आप लेके चलें. ये बड़ी, और शीबा इज वेरी क्लियर. आप अपनी मेंटेनेंस कहते हो ना कि टाइम टू टाइम अपने चेकअप्स हैं, आपके बाल हैं, मेकअप है, मतलब कपड़े हैं, कुछ भी है. आई थिंक अपनी आप कहते हो ना सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपना ख्याल रखें और इनिशियल स्टेज से ले लें उस चीज को. और शीबा ने जब कहा ना बाल गिरते हैं और फिर जब वो इतना गुच्छा निकलता है, वो मैंने कहा मेरे जैसा बंदा तो वो गुच्छा देखेगा और स्ट्रेस में आएगा और गिरेंगे बाल. हाँ, और एक बात मैं शीबा की इस बात में ऐड करना चाहूँगी, बिकॉज आई हैड PRP एंड आई गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स. बट यू नो वो आपने जो एज वाला फैक्टर बताया है कि हाँ, क्या जब आप यंग हैं तो डेफिनेटली मैं यही कहने वाली थी. बिकॉज सम पीपल व्हेन दे आस्क्ड मी, मैंने उनको बोला तो दे वर लाइक हमारे तो सारे बाल गिर गए. तो आई गेस आपको इसके लिए जो है ना, जो स्पेशलिस्ट होता है उसको कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है. एंड शीबा इज़ वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट, और बड़े आसान लफ्ज़ों में उन्होंने हमें सारी डिटेल्स बता दी हैं कि किस तरह से आपको ये चीज़ें लेकर चलना है. इट्स नॉट दैट के हम अब सबको कहें जी कि मैंने PRP करवाई आप सब करवा लें. नहीं, वही बात है कि हर किसी को कहते हैं ना हर चीज़ सूट भी नहीं करती. तो आप अपनी बॉडी को पहले जानें और उस हिसाब से कुछ जो भी करना है वो करें. अच्छा, हमने कर ली मेकअप की बात, ठीक है, बालों की, स्किन केयर की. ईमान, यू आर ऑल्सो लाइक ऑल ड्रेस्ड अप एंड लुकिंग वेरी नाइस. मुझे ये बहुत प्यारी लगी. थैंक यू. मुझे ये बताओ कि सिंगिंग का शौक कहाँ से आया और उसके लिए सीखा, या फिर जैसे कहते हैं ना इनबॉर्न था कि मेरी आवाज अच्छी है, या किसी ने कहते हैं ना कि डिस्कवर कर लेता है कोई. वैसे आपको पहले भी पता, लेकिन फिर बता दो, इसके लिए बता दो. मुझे ये शौक, हर बंदा कहता है मुझे बचपन से शौक था, मैं बोल देती हूँ बचपन से शौक था. बट मुझे ये नहीं था कि मैं कभी सिंगर बनूंगी, क्योंकि फैमिली में था ही नहीं कोई सिंगर, कोई शोबिज़ की लाइन में था ही नहीं. तो फिर घर वालों ने बोला कि नहीं, आवाज़ अच्छी है लेकिन प्रॉपर तरीके से फिर सीखो. फिर मैंने सीखा क्लासिकल, पॉप, फोक, फिर मैं सब गाना शुरू हो गई. फिर मेरा फर्स्ट एल्बम आया आज से कोई 6-7 साल पहले. फिर उसके बाद मेरा आया, फिर उसके बाद मेरा आया. अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरा एल्बम तो नहीं, लेकिन मेरा एक गाना 1 मंथ के बाद आ रहा है. क्या बात अच्छा, वाह. लेकिन वही बात है, क्लासिकल, पॉप और ये सारी चीजें कितनी डिफरेंट हैं, बड़ी वेरिएशन है, यू नो, हर चीज मतलब एक डिफरेंट जॉनरा आ जाता है म्यूजिक का. बिल्कुल, लेकिन आपको आना जरूरी है सारी चीजें, क्योंकि जितनी देर तक तड़का नहीं लगेगा ना तो मजा नहीं है. ये म्यूजिक का तड़का है. जैसे हंडिया में प्याज, अदरक, लहसुन हर चीज डलती है तो फिर एक मजेदार हांडी बनती है. इसी तरह म्यूजिक का ये सारा तड़का है, ये सारी चीजें आनी जरूरी हैं. जब आपको सारा कुछ आ गया तो फिर आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है. सही बात है. अगर आप हमें कुछ सुना दो प्लीज. हाँ, सुनाऊंगी, क्यों नहीं सुनाऊंगी. अभी मेरा एक गाना है, वो है, वैसे मैं सैड हूँ नहीं, लेकिन वो मेरा सैड गाना. बट आई लव सैड सॉन्ग्स, प्लीज सुनाइए. ये इसके लिए एक टिश्यू बॉक्स मंगवा लेते हैं, ये फुल फील में आ जाएगी. हाँ, चले मैं सुनाती हूँ. मैं सहना सीख लूंगी
सब गल्लां तेरियां एक वारी ते सुन ले तू अर्ज़ां मेरियां तेनू की खबरां ने की गुजरी है मेरे ते एक हासा ही रखिया मैं अपने चेहरे ते सकून जिया जांदा दिल नू मेरे किधरे मैं तेरे पैरां दे विच बहना ही नहीं सी जे तेरे बिन मेरा गुजारा हो जांदा मैं दूजी वारी तैनू कहना ही नहीं सी मेरे गुनाहां दी इन्नी सज़ा ना दे चाहे मार दे मैनू पर बेवफा ना कह गैरां दे नेड़े तू खुश तां बहुत होना मैनू मगर दस जा रातां नू किंज सोना मेरे सवालां दे लिख दे जवाब कोई मैनू खुशी दे के ले जाए सवाब कोई आस जे लग जांदी होरां दी मैनू भी मैं तेरियां यादां दे विच रहना ही नहीं सी जे तेरे बिन मेरा गुजारा हो जांदा मैं दूजी वारी तैनू कहना ही नहीं सी क्या बात ये है। बड़ा गिला शिकवा हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ना मतलब जैसी ईमान की पर्सनालिटी है ना द वेरी डोमिनेटिंग वन और वैसे मतलब कह रही है ऐसी की तैसी नहीं तेरी तू कैसे कह रहा है मुझे और मैं कह रही थी हमें कहती मुझे ये धोखा नहीं चाहिए प्लीज लेकिन वो दोबारा होगा लेकिन बीच में रोना भी आ रहा था रोना भी आ रहा बीच में लेकिन तब मैं ज्यादा रोऊंगी नहीं हाँ मैं रोऊंगी नहीं बेटा ऐसे कैसे रोऊंगी मैं बट आई लाइक द स्पिरिट बड़े मजे से इन्होंने गाया आवाज तो माशाल्लाह आपकी है ही खूबसूरत लेकिन एज अ पर्सन आप बड़ी प्यारी कहते हैं ना वो प्यारा सा इंसान है आप बहुत शुक्रिया जी अच्छा मैं महविश से पूछना चाहूँगी एज अ वुमेन एज यू इन टीवी होस्टिंग एंड मॉडलिंग आपको क्या लगता है बिकॉज यू आर हेयर इन पाकिस्तान एंड कनाडा एज वेल तो आपको क्या लगता है क्या डिफरेंसेस हैं पाकिस्तान में कनाडा और पाकिस्तान में क्या डिफरेंसेस हैं आप ओवरऑल बताएं हमें well there's a huge difference क्योंकि of course पाकिस्तान में हमारी पूरी मेजॉरिटी की ऑडियंस है हमारे व्यूअर्स ज़्यादा हैं प्लेटफॉर्म और सोर्सेज ज़्यादा हैं लेकिन कनाडा में क्योंकि अभी हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है काफ़ी है लेकिन मीडिया अब काफ़ी चैनल स्टार्ट हो गए हैं और बहुत सारे नए लड़के लड़कियां ज्वाइन कर रहे हैं और सबको हो रहा है कि यू नो वी वांट टू डू समथिंग डिफरेंट टू तो अभी हमारा भी वहाँ पे कंटेंट चल रहा है वहाँ पे अलग और डिफरेंट चीज़ें लाने की हम लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन अगेन मैं यही कहूँगी कि जो हमारे बहुत सारे वहाँ के टैलेंटेड एक्टर्स होते हैं सिंगर्स होते हैं उनको यही होता है कि यू नो वी शुड कम टू पाकिस्तान क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज होती हैं यहाँ पे बड़ा प्लेटफॉर्म है लेकिन हमारे बहुत सारे लोग उधर भी हैं जो इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं कि वहाँ पे कोई मूवी बनाई जाए या कोई ड्रामा बनाया जाए बहुत सारी म्यूजिक वीडियोस इनफैक्ट बहुत सारी मूवीज है जिनकी शूट भी वहाँ पे होती है एंड इवन लाइक हमारे जब अवार्ड्स आ जाते हैं जी इवन यू वर होस्टिंग राइट सो या आई मीन आई वाज हाँ फैशन शो और मैं भी वैसे जा रही हूँ ना इसलिए अच्छा ओके नाइस हां ओह वाओ वो भी बहुत कॉन्सर्ट है ज्यादा वाओ वेरी नाइस लेकिन ये है कि अगर आप बोलते हो ना कि कनाडा में जाके आप कनाडा हो या पाकिस्तान हो आजकल तो सोशल मीडिया का ऐसा है कि आप खुद ही वीडियो बनाओ और अपलोड करी जाओ सेल्फ आई थिंक सेल्फ प्रमोटिंग वाला भी और ये लक होती है कई लोग इतना पैसा लगा के मेरे जैसे आपने लेकिन आप इन्वेस्ट किया वो रिस्पांस नहीं मिला वेरी हाँ लेकिन ये है कि कई हम लोग देखते हैं हम लोग किसी को जानते भी नहीं है वो रातों रात यूं क्योंकि अल्लाह पाक इज्जत देने वाला है बिल्कुल बेशक लक है ये ईमान ये बात बिल्कुल सही की है इस पे डू यू थिंक
think کہ ہمارے یہاں, یا میں صرف یہ پاکستان کی میڈیا فریٹرنیٹی کی نہیں بات کروں گی, میں ایون ابراڈ, آپ ہالی ووڈ لے لو, بالی ووڈ لے لو, ڈو یو تھنک یہ بہت لابی ہے, ایک فیوریٹزم ہے, تبھی ایک بندہ جو ہے بہت عرصے بعد آتا ہے, ایک بندہ آتا ہے تو وہ راتوں رات بھی, اٹس لائک ہی از اے اسٹار. I think that's also luck, right? Yeah. Really? Okay, let's just have an opinion on that. اچھا, it's talent always, but luck plays a very major role. کوئی ٹیلنٹ صحیح ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا ایویں اس کو ہاں یہ وہ ایویں. اچھا, لوگ آپس میں بول بھی رہے ہوتے ہیں, اس میں کیا ایسی خاص بات ہے, یہ کیوں, لیکن پھر بھی ہو رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے اس میں کیا خاص بات ہے. چول مارتی, جو ایویں چولے مارتے نا وہ ہٹ ہو جاتا ہے, لیکن وہ ہونی نہیں چاہیے. لیکن میں ایک بات ضرور ایڈ کروں گی, یو رائٹ, کہ ہم لوگوں نے بہت دیکھا کہ ایسے لوگ بہت آئے اور راتوں رات وہ ہٹ بھی ہوئے, لیکن میں کہتی ہوں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سسٹین کس نے کیا, سسٹین یا رکا ہمیشہ وہ جس کا کام اور جس کی جو کوالٹی ہے وہ ہائی تھی. آپ جب بھی کہیں آتے ہو راتوں رات یہاں پہ بہت سے چہرے آئے, بہت سے سیلیبریٹیز آئے, بہت سے آئے, ہمیں نام بھی یاد نہیں, بعض دفعہ ایسے ہو کہ انہوں نے ایک ہی دن میں ملینز کو ٹچ کیا, لیکن کیا مجھے, آپ کو یا کسی اور کو یاد ہے, نہیں. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں, چاہے آپ بہت پرانے سنگرز اٹھا لیں, آپ مہدی صاحب کو اٹھا لیں, آپ نور جہاں جی کو اٹھا لیں, دیکھیں اب وہ جس زمانے میں تھے اس زمانے میں اتنا سوشل میڈیا نہیں تھا, لیکن ہمارے جیسی جنریشن آج بھی ان کو ریسپیکٹ کرتی ہے, آج بھی ان کا نام لیتی ہے. بالکل, ایک ہی ٹی وی تھا, ریڈیو پہ آتے تھے تو سب لوگ سنتے تھے بڑی توجہ. اب چینلز کا ہی نہیں پتا کتنے چینلز ہیں, سوشل میڈیا, ہر بندے نے اب چینل بنایا ہوا, ہر بندے نے یہ بھی اسٹار, اچھا یہ بھی میں نے دیکھا ہے, سچی مچی مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ فلاں بندہ, میرے کانسرٹ ہو رہے ہوتے ہیں ان لوگوں میں, کہتی ہوں اچھا یہ کون بندہ آ رہا ہے, اچھا یہ بندہ آ رہا ہے, اچھا اچھا. جب ہیبا بہت اچھا کام کرتی ہے, ہیبا میری فیملی فرینڈ ہے. ہیبا جب میں اور ہیبا, میں نے کہا ہیبا تم کیوں نہیں آگے نکلتی, اتنی پیاری بھی ہو, اتنا اچھا بولتی ہو. آج میں نے دیکھا ہیبا کو سچی مجھے اتنی تو آج شوق مجھے نہیں پتا تھا ہیبا ہے, تو میں نے دیکھا, میں نے کہا شکر ہے تو بھی باہر نکلی, ورنہ تو مری میں جا کے بیٹھی رہتی. میں کیا کروں, مجھے پہاڑ ہی بڑے پسند ہیں, مجھے وہ کہتے ہیں نا سٹی لائف سے دور. آئی تھنک وی آل نیڈ دیٹ اے لاٹ ان لائف, بٹ یس یو آر رائٹ کہ وہی بات ہے, ایک اپرچونٹی ملنا سب سے بڑی چیز ہے, اس کو اویل کرنا اس سے بڑی چیز ہے. اینڈ دین تھرڈلی جو شیبا نے بات کی کہ ٹھیک ہے انسان کو کہتے ہیں نا اوور نائٹ فیم وہ چیز سب مل جائے گا, بٹ دین اگین واٹ سسٹینز از یور کوالٹی آف ورک. یس ڈیفینیٹلی, اور میرا خیال ہے آپ جب تک کسی چیز کے قابل نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ بھی وہ چیز آپ کو نہیں نوازتا. اور اگر ہم کو لگ رہا ہے کہ کوئی چیز ہمیں دے دی اور وہ آزمائش کے طور پہ ہمارا صرف ٹرائل ہے, تو اس چکر میں ہم کسی کا نقصان نہیں کر سکتے. اللہ پاک نے آپ کو عزت دے دی ہے نا, تو اس کو سنبھالنا بڑی بات ہے. جو لوگ, کچھ لوگ نہیں سنبھال پاتے, وہ سمجھتے پتہ نہیں میں کیا ہوں. اکثر یہ جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں, یہ فلاں سٹار ہے فلاں سٹار ہے, میں اس کا نام تو نہیں لے رہی وہ چیزوں کا کہ وہ کون سی ایپ ہیں, لیکن وہ کہیں گے ہم فلاں سٹار ہیں. جی اچھا اچھا آپ بھی سٹار ہو, اگر اللہ پاک نے آپ کو عزت دے دی ہے تو آپ جھکو, جھکے کو پھل لگتا ہے. لیکن لوگوں میں یہ چیز نہیں ہے, وہ کہتے ہیں پتہ میں نہیں, وہ بات ہے جب میں آ جائے گی نا آپ میں, دیٹ از دا ڈے جب آپ کا ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا. سمجھا رہی ہم لوگ ابھی بریک کے بعد ابھی چھوٹی سی بریک لینے لگے, اس کے بعد ہم واپس آئیں گے اور پھر یہی ہلا گلا اور ماحول چینج ہو گیا ہے, ہم گپ شپ لگائیں گے. وی ول بی رائٹ بیک.
की भी शिद्दत में इजाफा हो रहा है, और उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी हैं, जैसे कि यहाँ पे घुड़सवारी है, घुड़सवारी के साथ साथ यहाँ पे कैमल राइड है, फिर उसके अलावा जो है डर्ट बाइक है वो कर सकते हैं, फिर खाने पीने के लिए यहाँ पे बहुत देखा देखा फॉरेन। अब एंजॉय करें पाकिस्तान के हसीन नजारे अपने आईपैड, स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन, आईफोन या किसी भी डिवाइस पर इन अल्ट्रा एचडी क्वालिटी, जब चाहें जहां चाहें डिस्कवर करें पाकिस्तान। ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान। डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बड़ी मज़ेदार बातें कर रहे थे, एक बड़ा इजी सा माहौल हो गया, एकदम बिल्कुल सीरियस डिस्कशन से ना। और वो कहते थे एक डिस्कशन की जो है ना वो डाइवर्जन बड़ी वो एक मीडिया एंड फैशन एंड उस तरफ चली गई है। सो एज वी आर स्पीकिंग ऑफ फैशन एंड मीडिया, Mehwish, do you feel that you're into modeling, you're into hosting as well, so you are the face of the camera, right? I mean, you're very camera friendly, of course. But do you feel that beauty standards have now changed a bit, और थोड़ी सी adaptability आ गई है, whether it comes to it's now different body types हो गई, आपका कलर हो गया, हम अब वो नहीं एक स्टिग्मा में बैठे हुए कि नहीं एक बंदी गोरी है या पतली है या लंबी है या इस तरीके से वही चीज़ जो है एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में। डू यू थिंक अब थोड़ा बहुत बेहतर हो चुका है? आई थिंक अब और ज़्यादा वर्स हो गया, और उसका रीज़न ये है, दैट्स माई ओपिनियन, आई डोंट नो कि बाकी लोग अग्री करेंगे कि नहीं। What I have noticed is that अब जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं वो इतने ज़्यादा आई थिंक पहले जो एक टाइम होता था कि लोग सोचते थे कि उसने कोई प्लास्टिक सर्जरी कराई है या ये है, लेकिन अब जो एक सर्टेन लुक शेयर कर दी गई है, बहुत सारे लोग कार्डाशियंस को फॉलो करते हैं एंड दे वांट टू जस्ट लुक लाइक देम, दे फील कि ऐसी ही बॉडी होनी चाहिए, आपका फेस कट यूँ होना चाहिए, आपको ऐसा ही दिखना चाहिए। एंड स्पेशली उस साइड पे नॉर्थ अमेरिका की साइड पे आई हैव नोटिस्ड जितनी भी लड़कियां 80% लड़कियों ने जैसे दे वांट टू गेट लिप फिलर्स, दे आर नॉट हैप्पी विद
کہ وہ جس طرح دکھتی ہیں. اور اس کی ریزن یہی ہے کہ جب تک آپ میڈیا پہ اس چیز کو دکھانا بند نہیں کریں گے تب تک آپ کو اپنے اندر فلاز ہی لگتے رہیں گے. آپ کو لگے گا کہ اچھا لپس کا شیپ ایسا ہونا چاہیے, آپ کی نوز یوں ہونی چاہیے, فیس کٹ یوں ہو, باڈی ٹائپ ایسی ہونی چاہیے. آئی فیل کہ ہر باڈی شیپ کو, ہر سائز کو, ہر لک کو ہمیں میڈیا پہ دکھانا چاہیے تاکہ جو ہمارے ینگر جنریشن ہے, جو یوتھ ہیں, وہ اپنی اسکن میں, اپنی لک میں سیٹسفائڈ ہوں اور خوش ہوں اور اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش نہ کریں. بیکاز آئی تھنک جیسا ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ہم کو ویسے ہی رہنا چاہیے اور اسی نیچرل وے میں رہنا چاہیے. اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. تو وہ ہم سے ہی اسٹارٹ ہوگا. جب تک ہم میڈیا پہ بہت فلالیس لوگوں کو دکھانا بند کر دیں گے اور تھوڑی سی آئی تھنک کہ تھوڑی سی نیچرل اور امپرفیکشن بھی ہونی چاہیے, ریلیٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ ایک نارمل لڑکا یا لڑکی ایسے دکھتا ہے ہونا چاہیے. مطلب نارمل فیٹس, نارمل برگس, ڈبل چن, یہ آئی مین وہی بات ہے نا, بہت زیادہ ڈبل چن ہاں نہیں ہونی, بٹ وی آل ہیو پورز, تھوڑا سا نیچرل ہونا چاہیے. But I think we should promote that. Just accept yourself and be natural. Yeah, and be happy with how you look. And sometimes girls have this perception کہ oh my god, since ہم لوگ جس طرح اتنے جو کہتے ہیں نا میڈ, بال بنے ہوئے, میک اپ ہوا, all of that, it's because ہماری پوری ٹیم ہے اس کی بیک گراؤنڈ میں. اینڈ ہماری بھی جیسے کہتے ہیں نا اسکن, اٹس ناٹ آلویز پرفیکٹ. وی ہیو ٹیکسچر, وی ہیو پورس, بٹ وہی بات ہے کہ ایک ایکسیپٹنس اپنی جو ہے نا وہ جب آپ کر لیں گے, آئی تھنک یو ول بی ویری کمفرٹیبل ان یور سیلف. بالکل, اور یہ بہت ضروری بھی ہے. اور شیبا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی دیٹ یو بین ٹو 18 کنٹریز فار لرننگ, تو آپ نے کیا سیکھا ہے مختلف ملکوں سے کہ کیا ان کے ہیئر اسٹائلنگ کے کیا پروسیجرز ہیں, اینڈ ڈو دے لائک کچھ کنٹریز ایسی ہیں دیٹ دے ڈونٹ وانٹ ہیئرس, they go bald and they look like that and they adore themselves as it is. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ as a hair expert آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں آپ کے پاس آنے والے کلائنٹس کو, بیکاز سم ٹائمس کچھ ایسی ایشوز ہوتے ہیں لائک کینسر پیشنٹس ہیں, they go bald due to certain reasons, everyone knows. تو ہم اس کو پاکستان میں یہ بالوں کے رولے ہیں, باہر تو بالکل میں اسی بارے میں ہم ایسا نہیں, ہمارا ہیئر اسٹائل ایسا, ہمارے کپڑے ایسے, یہ وہ باہر جائیں کہیں کسی کو کوئی ٹینشن نہیں, کچھ پہننا ہے کچھ پہننا. اسی لیے میں اسی لیے شیبا سے یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے 18 ملک وزٹ کیے ہیں اینڈ یو آر اے ہیئر ایکسپرٹ, تو آپ نے کیا ورسٹیلٹی دیکھی ہے, کیا ڈائیورسٹی ہے ڈفرینٹ ملکوں میں اور پاکستان میں, اور آپ کیا چاہتی ہیں کہ وہ پاکستان میں بھی آنی چاہیے؟ دیکھیں ان تمام کنٹریز میں جب میں نے وزٹ کیا تھا, اوبیسلی اس میں ایز اے ٹورسٹ بھی میں نے وزٹ کیا تھا, ایز اے ٹرینی بھی میں نے وزٹ کیا تھا. ڈفرینٹ کنٹریز میں نے اپنی ٹریننگس بھی لی ہیں اور کلچر کو میں ہمیشہ اسٹڈی کرتی ہوں. میں جہاں پہ بھی جاتی ہوں ڈفرینٹ کنٹریز کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں آپ اپنی زندگی کو ایزی کریں, جیسے بھی مہوش کو میں سیکنڈ کروں گی, آپ جس اسکن میں ہیں آپ اس میں رہیں. باہر کے لوگ ہیں, اگر یہ کہا جائے کہ وہ فنکی نہیں ہے, آپ بلیو کریں جو خواتین اپنے بالوں کے بارے میں ٹچی ہیں وہ اس قدر ٹچی ہیں کہ ان کے بالوں میں اگر ایک ہلکا سا فریز بھی آ جاتا ہے تو اس پہ ان کو پرابلم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور جہاں تک یہ اور بوٹاکس, باہر زیادہ تر کاسمیٹولوجی کے بعد ڈرماٹولوجسٹ پروسیس بہت زیادہ ان ہو گئے ہیں. اگر وہ لوگ زیادہ میک اپ نہیں کرتے ہیں تو انہوں نے کیونکہ لپ ٹنٹ کروائے ہیں, انہوں نے چک ٹنٹ کروائے ہوئے ہیں, آئی لیش ایکسٹینشن ان کی ہوئی ہوئی ہیں, آئی بروز جو ٹیٹوز ہیں ان کا ہوا ہوا ہے, لپ ان کا جو ہے فلر کے ساتھ ہوا ہوا ہے, ایچ اینڈ ایوری فائن لائنز ان کی تھریڈس کے ساتھ جو ہے پیک اپ ہوئی ہوئی ہیں. تو لیکن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں جو میرے پاس جو لوگ بھی آتے ہیں, کچھ چیزوں پہ آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں, کچھ پہ نہیں کر سکتے ہیں. یہاں پہ خواتین کا یہ ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ جی اگر آپ کے بال میں یہ والے لو لائٹس ہیں مجھے یہی کلر چاہیے. دیکھیں آپ کے بالوں اور میرے بالوں کے ٹیکسچر میں بہت ڈفرینٹ ہے, اور ڈفرینس ہمارا جینیٹیکلی بھی ہوتا ہے. ہم ہمیشہ ایک بات بھول جاتے ہیں, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, میرے پاس اکثر خواتین آتی ہیں انہوں نے ایک بہت بڑی سیلیبریٹی اور ایک انڈیا جو بھی انڈین ہے پاکستانی کسی ایکٹر کا کہ جی مجھے ایسے بال کر دیں. تو میں ہمیشہ میں ان کو وہی کہتی ہوں کہ پیچھے دیکھیں ہر ایک کا بریڈ اینڈ بٹر چل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ٹو لک گڈ, ٹو پریزنٹ یور سیلف گڈ از دیئر بزنس, ٹھیک ہے. بالکل جیسے جو بینکرز ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے پالیسیز کے اوپر ہولڈ کرنا. اگر ان کو اچھی پالیسیز نہیں پتہ ہوں گی, ان کی پرسنالٹی اچھی نہیں ہوگی, تو وہ بینکنگ سیکٹر میں اپنا آپ کو پراپرلی پریزنٹ نہیں کریں گے. یہ ان کی مجبوری ہے, چاہتے چاہے گرمی ہے سردی, انہوں نے سوٹ پہن کے ہی آنا ہے. اسی طرح جو میڈیا پرسنلز ہیں ان کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے. اسکن ان کی ہم سے بعض دفعہ زیادہ خراب ہوتی ہے کیونکہ ہم تو شاید ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ ہم ہیوی میک اپ کرتے ہیں, وہ ڈیلی میک اپ وہ کرتے ہیں, ان کی مجبوری ہے. تو
मैं सिर्फ ये कहती हूँ जो अपने बाल हैं उनके ऊपर आप प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट मत लगाएं। आपने रिकमेंड किया मैं एक आपका ले लूंगी, आपने रिकमेंड किया ओह अच्छा नहीं, आप कहेंगे नहीं ये वाला सीरम मैं वो भी ले लूंगी, नहीं ये वाला सीरम मैं वो भी ले लूंगी, 4 सीरम पता है अपना ले लूंगी तो 4 सीरम मेरे टेबल पे रखे हुए हैं और मुझे ये नहीं पता उनमें से कौन सा मेरे बालों को सूट करता है। मैंने जी 10-10 हज़ार के 40 हज़ार का प्रोडक्ट मेरे टेबल पे पड़ा हुआ है, लेकिन वो मेरे किसी काम का नहीं। उससे बहुत बेहतर है एक अपने स्टाइलिस्ट के पास या टेक्नीशियन के पास जाएं, वो आपको 40 हज़ार की जगह अगर वो आपको 10,000 15,000 की चीज़ रिकमेंड कर रहे हैं तो प्लीज़ बाय करें। हम लोग जब बाहर जाते हैं इतने पैसे लगाते हैं लाखों में, और पाकिस्तानी रुपये में नहीं लगाते हैं, पाउंड्स एंड डॉलर्स में स्पेंड करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। आप बिलीव करें कि हम लोग जब आपको प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे होते हैं उसमें से 100 200 500 रुपये वाला प्रॉफिट हमने नहीं रखना होता, हम आपको एक अच्छा चीज़ प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, और जो प्रोफेशन आपको रिकमेंड कर रहा है प्लीज़ आप उस पर जाएँ, उसको लें और अपनी स्पेसिफिक चीज़ें बना लें। हेयर के लिए मैक्सिमम 2 चीज़ें अगर आपकी यानी आपका शैम्पू, कंडीशनर प्लस सीरम, ये 3 चीज़ें आपके पास हैं, आपको इसके अलावा किसी और एक्सेसरी की ज़रूरत नहीं है। स्किन के बारे में मैं कहती हूँ क्योंकि मैं सिर्फ हेयर के साथ नहीं, मैं स्किन के साथ भी हूँ, मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, मैं स्किन की भी ट्रीटमेंट्स वगैरह फेशियल्स में मैं काम करती हूँ। तो देखिए स्किन में ये मैं हमेशा हर एक को, मुझे तो लगता है मैं पकड़ पकड़ के कहती हूँ, अगर आप मेरे मॉर्निंग शोज़ में देखें, रात की क्लिनजिंग मस्ट है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप प्लीज़ क्लिनजिंग रात को करके सोएं। एक अच्छा सा क्लिनजिंग आप मिल्क ले लें, उसके बाद या कोई भी क्लिनजिंग क्रीम ले लें, उसके बाद आप अच्छा कोई भी, अगर आपके पास टोनर नहीं है तो अर्के गुलाब अल्लाह ताला ने इस कदर खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं, उसको स्प्रे करके आप सो जाएं। और एक नाइट क्रीम सुबह के वक्त आपने कुछ भी अगर नहीं लगाना, मॉइस्चराइजर कोई भी आम क्रीम लगाएं तो सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं, यानी क्लिनजिंग और सन ब्लॉक। सन ब्लॉक अगर आप चाहते हैं अपनी उम्र से आप तकरीबन यानी मैं पहले भी कहती हूँ अगर आप क्लिनजिंग करते हैं और सन ब्लॉक लगाते हैं तो आप डेली अपनी एजिंग को 4 डेज से कम करते हैं, 4 दिन से आप कम करते हैं। अब आप खुद अंदाजा कर लें कि अगर आप नहीं करते तो आप कितने बड़े हो गए हैं आप। बस फिर हम forever 16 है। बिल्कुल अब हम टीनेजर्स से ऊपर नहीं जा रहे शिवा। क्योंकि मेरा ख्याल है मैं इस टॉपिक को मैं हर एक को इतना, आप यकीन करें, आप इस तरह अक्सर मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि आप तो इतनी होम केयर बता देती हैं, आप ये करती हैं, तो लोग आपके पास तो फिर आना छोड़ देंगे। तो मैंने यही बात तो ये मैंने कहा देखो आई रियली वांट कि मेरी भी इनकम हो, मैं पैसे कमाऊं, लेकिन मैं जायज़ कमाना चाहती हूँ। तो बेहतर, और जो रिस्क बीना मुस्लिम हमारा कुछ चीज़ों पे बड़ा फर्म बिलीव है, जो रिस्क हमें हमारी लिख दिया गया है वो लिख दिया गया। मेरे पास कोई भी नहीं ले सकती, वो आप नहीं लेना। बिल्कुल, तो उसमें यही है, अब मेरा तरीका है कि मैं उसको झूठ बोल के गलत प्रोडक्ट बता के मैं उसको अर्न करूँ, या मैं उसको सही प्रोडक्ट से करूं। और ट्रस्ट मी, मेरे पास आउट ऑफ कंट्री से क्लाइंट्स आते हैं, दूसरे शहरों से लोग ट्रैवल 10-10 घंटे का ट्रैवल करके आते हैं अपने छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स के लिए, क्योंकि उनको पता होता है कि एट द एंड ऑफ द डे उनको जो चीज़ रिकमेंड की जा रही है वो उन्हीं के फ़ायदे के लिए। तो आप लोग प्लीज़ बस थोड़े प्रोडक्ट लें, ढेर सारा जो है मेकअप अपने टेबल पे मत लगाएं। मेकअप अगर एक्सपायर हो रहा है, हर चीज़ की एक्सपायरी है, 15 साल पुरानी पैलेट्स फेंक दें जो अम्मी की जहेज की आपको मिले थोड़ा थोड़ा लें आप, लेकिन ये कि आप इन चीज़ों को ज़रूर केयर करें। पानी पिएं, नींद अपनी प्रॉपर लें, स्ट्रेस जो है उसको कम करें, स्ट्रेस देने वालों से दूर रहें। यही छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप फॉलो करें। अबीरा, जैसे हम बात की कि एक्सपायरी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरा ख्याल है अब जितने छोटे छोटे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ना मिनी उसके साथ ना मतलब वो तो खत्म हो जाते हैं जल्दी जल्दी। मैं ये सोच रही थी कि वो जो छोटी सी सेफोरा की है किसी की चलेगी उसको मैं क्या करूँ। हम लोगों ने ग्रूमिंग का सेशन किया था, तो उसमें ये था कि जो कि हम लोग मेकअप भी सिखाते हैं और ग्रूमिंग के लेक्चर्स भी हम लोग क्लासेस देते हैं, तो उसमें मैंने उनको नेक्स्ट डे एक दफ़ा कहा था कि जो भी आपके घर में मेकअप है आप लेकर आएँ, ताकि आपके पास जो अवेलेबल चीज़ है उससे मैं आप गाइड करूँ। आप बिलीव करें उस वक्त हमारा 30 लोगों का स्टूडेंट्स का ग्रुप था, 30 में से कम से कम 28 ऐसे स्टूडेंट थे जो कि एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स लेके बैठे हुए थे। जी, ये बेस तो मैंने 5 साल पहले मैं वहाँ गई थी, मैं लेकर आई, और चूँकि ये थोड़ा कलर मैच नहीं किया तो मैंने अब उसके बाद ये लिया। कभी कभी मैं इसका एक ड्रॉप डाल देती हूँ। स्टॉप डूइंग दिस। वो चीज़ ज़ाया होती है, बाद में जो आप 1500 की बेस और पाउडर बचा के बैठे हैं, बाद में जाके डर्मेटोलॉजिस्ट से या किसी अच्छे टेक्नीशियन को 6000 की फी देने हो। वही बात है, अपना खर्चा बचाएं, बट वही बात है थोड़ा बहुत इन चीजों पे जो है ना आप केयरफुल रहें। अच्छा, हमने काफी सीरियस बातें कर ली ईमान, थोड़ा सा माहौल चेंज करना है क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है। वी जस्ट वांट अ वेरी लाइटर नोट फ्रॉम योर साइड, और आप कुछ सुना दें हमें। अब मैं क्या सुनाऊं? कुछ भी, अपना गाना है या कोई गाना या कोई और।
गाने किन्ने लिख दिते शायरां ने दुनिया ते मेरे उत्ते तू भी एक गाना लिख वे किन्ना तेनू प्यार करा किन्ना मैनू तू करे हुंदा नी ओ पल भी गुजारा लिख वे तू मैनू दिसदा किताबां चों तू मैनू दिसदा दीवारां चों मैं भी तां दिसदी होनी तैनू तेरे ख्वाबां चों कदी मैनू याद करने नू किसे यार दा तू लैंदा जदों मोढे दा सहारा लिख वे गाने किन्ने लिख दिते शायरां ने दुनिया ते मेरे उत्ते तू भी एक गाना लिख वे उतों मिठी मिठी कहंदा लाड तो विचों कहंदा हुण जहर मथे लग गई तैनू इन्ना प्यार कर दिया कोजिया तेरे गुस्से विच भी मैं रवां हसदी तू मेरा हाल नहीं पुछदा साल साल नहीं पुछदा चाहे लंबे रख लाया मैं छोटे वाल नहीं पुछदा घर वालियां दी लाडी तेरा गुस्सा करके बिगाड़ लैंदी मूंह इन्ना प्यारा लिख वे गाने किन्ने लिख दिते शायरां ने दुनिया ते मेरे उत्ते तू भी एक गाना लिख वे बड़े मजे का था। अच्छा ये बिल्कुल ना वो कनाडा में कॉन्सर्ट वाली जो वाइब है ना वो मुझे पहले ही आ रही है because whenever we see the Canadian you know Canadian जितने भी कॉन्सर्ट्स होते हैं पंजाबी एंड ऑल तो वो सारे मतलब यही वो अबीरा कोई हमारे पे भी गाना लेंगे गिले शिकवे हैं ना लड़कियों के बड़े वो अपने किसी का बॉयफ्रेंड किसी का हस्बैंड इसमें फोन भी आता है इसी में वो सारा कुछ आता है कि मैं इतना कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए लेकिन तुम मुझे टाइम नहीं देता गाना लिख तरीफे सही बात है और वही बात है कि म्यूजिक जो है ना एक एक्सप्रेशन है आपका आपके इमोशंस का और हमारे वक्त हो गया है शो का यू नो ऑलमोस्ट एंडिंग पे बट वी वुड रियली लाइक टू थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो थैंक यू शीबा थैंक यू ईमान एंड थैंक यू सो मच हिबा तुमने मेरा नाम लेके नहीं कहा थैंक यू नहीं थैंक यू ईमान एंड थैंक यू शीबा एंड महविश फॉर बीइंग ऑन द शो बहुत मजा आया कि आप हमारे शो पर आए और हम अपने शो की तरफ से सलाम पेश करते हैं इन तीनों सुपर पावर लेडीज को जो पाकिस्तान की एक बहुत खूबसूरत और सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में दिखा रही हैं थैंक यू सो मच और हमारे अब शो का चूंकि वक्त खत्म हो रहा है और हम आपसे कल मिलेंगे विद सम न्यू गेस्ट न्यू एनर्जीज और विल सी यू टुमारो तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड स्टे काइंड एंड बी पॉजिटिव टेक केयर